Hello, everyone. Welcome to another fantasy match review. This is for the game between Trent and Welsh, powered by Nostra Pro and powered by Fan2Play. And we are coming to the fag end of this tournament. And if you ask Nikhil Bhai, he says that he surely wants an extension of this tournament, and he'll tell you why and more on the same. Yeah, because life is risk, and what is games without taking risks when people are getting bowled out for 70, 80, and all that rubbish with the kind of pitches that we have. हाँ एक्सटेंशन चाहिए क्योंकि ग्रैंड लीग का बेस्ट चांस इसी में लगता है. कल भी आते आते चली गई क्योंकि लिटिल नहीं था मेरी टीम में. लिटिल मेड अ मैसिव डिफरेंस. लास्ट के 2 विकेट कोई भी ले लेता तो चलता मुझे. दोनों रन आउट हो जाते तो भी चलता, पर ठीक है, दैट्स वी कीप ट्राइंग. Absolutely. And how do you feel about most of the games that are going to come up? Most of them are going to be knockouts from here on. Yeah, I think Welsh have already experienced a lot of knockouts. So very interesting to see if they can knock somebody out. A But knockout punch. that's difficult to have see happening purely because of the way some of the pitches have been. और जिस तरीके से का क्रिकेट भी खेल रही है वेल्स, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता. कॉन्फिडेंस तो वैसे कोई भी टीम को देख के नहीं आ रहा. जैसे कल बर्मिंघम भी खेली, आपको लगा यार स्कोर डिसेंट है, चेज हो जाएगा, बट पिच इतनी ऐसी निकल रही है कि टॉम आटली सब विकेट ले रहे हैं. मतलब बारात लग गई है विकेट से. Right, totally. And I see that many people here had really good ranks in the depositors leaderboard. So congrats to all of you that ended up getting a prize. And we hope that we can help you towards more such offers and more freebies that can help you get forward in your fantasy journey, along with the base team for tonight's game that I'm just about to share. Before I share the base team, just say hello. Let me know if you're here and Yeah. what language you guys are comfortable in, Hindi or English, so that we can go with the majority for now. And if you're comfortable with both and don't know what to do, then hit the like button so that I know that you love me as much as I love you. शाबाश शाबाश, प्यार बढ़ना चाहिए तो ही बढ़ता है. So ये है हमारी आज की बेस टीम. Going with Tom Kohler Cadmore, but this is one pick that maybe I'll have a difference with on Nikhil Bhai, because he's going more on the side of Kohler Cadmore, but I feel like he might have a matchup in front of Ace Sodi, even though his ground numbers here are decent. While I feel like this kind of pitch or this kind of ground is the place for Tom Banton to really hit into form. So what do you say, Nikhil Bhai? In an ideal world, I would have 100% gone with Tom Banton, but this is 2022, and you are seeing how openers are batting in this particular league. Jason Roy, there are so many. You can't count the number of times the openers haven't got off to a good start, and of course there are random things that are happening that you can't stop at any point of time. But I'm trying to cover more Trent Rockets bowling क्योंकि मुझे लगता है कि Rockets की team is better placed to take more wickets as compared to the runs. And TKC को लेने का कारण मेरा ये है कि in case जल्दी विकेट गिरती है तो TKC could come in and play a good knock. तो एक थोड़ा सेफ्टी बैंक भी अगर आप देखो तो उस लाइन में सोच रहा हूँ मैं. पर हाँ, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि टॉम बैंटन चलेगा तो बिल्कुल आप टॉम बैंटन के लिए जा सकते हो. बिल्कुल. तो अभी के लिए जाते हैं with the safe pick in Cadmore. Then 3 batters: Alex Hales, who's going to play on his home ground, so good GL captaincy choice. David Malan, who's been in good touch, and so has Ben Duckett. Any differentials here, or this is the place where you don't want to fidget at all? आइडियली इस जो जो दो टीम्स खेल रही हैं, वन इज वेरी टॉप हेवी. जो अगर वो चल जाएं तो दूसरों को बैटिंग नहीं मिलती. We saw what happened with Munro. It was very frustrating to see him bat below Gregory, and very happy that the team lost. क्योंकि कभी-कभी मुझे लगता है टीम You deserve it. बहुत ज़्यादा अगर सोचती है तो it backfires, and which is how it should be, right? आप नॉर्मल क्रिकेटिंग लॉजिक को कब तक ही स्ट्रेच करके सोचोगे कि सब आपकी तरफ जाएगा. तो आई थिंक मुंड्रो अगर आपको लगता है कि चल जाएंगे, यहाँ पे वी कीप सेइंग प्लीज वॉच द वुमेन्स गेम, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत हद तक आइडिया मिल जाती है कि पिचेस कैसी हैं. अभी पिचेस यूज होंगी, आज की शायद फ्रेश हो सकती है क्योंकि नॉटिंघम में बहुत टाइम के बाद मैच हो रहा है. तो अगर आपको लगता है कि अच्छा बैटिंग विकेट है, पहले बैटिंग करिए ट्रेंट, तो आप मुंड्रो को ले सकते हो. पर चेस कर रही है तो क्या आप श्योर हैं उनकी बैटिंग आएगी और उन्हें अच्छा स्कोर करने मिलेगा?
तो फिर भी आप उन्हें बैक कर सकते हो, क्योंकि फिर आप शायद चाहेंगे कि आप ज़्यादा बॉलिंग कवर करें, क्योंकि अगर बॉलर 1 या 2 विकेट लेगा तो आपको मुंड्रो के 20-25 रन कवर हो जाएंगे वहाँ से। सो दैट इज़ द लॉजिक देयर। और यू ऑल्सो हैव मिलर टू ट्राई आउट। तो हाँ, ऑप्शन तो हैं, बट इवेंचुअली इट इज़ अबाउट हाउ यू फील द गेम विल पैन आउट। Right, and we are currently, I've just put in the comment section, we have not taken any of Miller, Shamsi, and Pretorius because we are assuming that they're off to the CPL, and Pretorius, Yeah. I guess, put a story to justify that, and we are assuming कि तीनों South African दोस्त हैं, तो साथ में ही गए होंगे. So that is the reason for not picking them right now. But yes, like we mentioned, they all three are worthy of considering in different scenarios. Shamsi when he's bowling second, Yeah. Pretorius when he's bowling first becomes good captaincy choice, and Miller on such ground dimensions can really hit it up. And I'll show you the ground dimensions a little later once we cover the full team. या आई थिंक एक सिर्फ बैटर में अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो दैट वुड बी लुइस डिप्लॉय। ही इज कमिंग इन इन द मिडिल ऑर्डर, उनको काफ़ी अच्छा समय मिल रहा है स्पेंड करने को। ही स्कोर कंटिन्यूस 30-20-30, तो इज अ गुड ऑप्शन अगर आपको फिर से लगता है कि विकेट जाएंगी जल्दी एंड देन ही गेट अ गुड टाइम टू बैट, तो यू कैन डेफिनेटली टेक समबडी लाइक हिम से इन प्लेस ऑफ रायन हिगिंस। हमने हिगिंस को अब इसलिए लिया क्योंकि अगर पहले Assuming that. बॉलिंग करते हैं so he would be very handy. And yeah, so I think that one option is also good for you to try out. Yes, so now that he's spoken about it, the four all-rounders, Sams, Patel, Higgins and Critchley, few interesting things that you'll have to think about. Samit Patel will bowl to a few left-handers, but again, this is his home ground, and because the left-handers that he's going to bowl to are not in great form, that's the reason for considering him. But if you feel like the pitch is flat out for batting, then it's a chance that you can take. But yeah. It's a used wicket. The women's gaming is happening on a used wicket. तो Okay. it's very likely कि same deck use हो, तो वो Then बस it's ध्यान में going to रखना। be minute. हाँ, तो बट देखो ये 100 है, इधर कभी कभी लॉजिक और कॉमन सेंस आते ही नहीं है छुट्टी पे हो लोग, तो लिए समित पटेल को यूज ही ना करे ऐसा भी हो सकता है। तो गो विथ द कॉम्बिनेशन दैट यू फील विल वर्कआउट। तो जैसे वीरेन ने सही कहा, समित पटेल कुड आल्सो बी यूज्ड इन द बैटिंग ऑप्शन। वहाँ पे बहुत खेले क्रिकेट समित पटेल। नोबडी नोज दीज कंडीशंस मोर देन हिम राइट नाउ। मे बी एलेक्स हेल्स माइट नो एज मच। तो he's a very There's a crucial dark player. horse here. There's a dark horse, Joe Clark from Nottinghamshire, who's सब batting like ग्रैंडी he पिक्स can सब compete with Shahnawaz Dahani the way he's batting in the batting यार, section. मतलब शाहनवाज दानी ने कल 15 बॉल में 5 बॉल में 16 मारे, तो अगर Sorry, ऐसा वो दो। तो इसका टूर्नामेंट टैली है. Sorry. हाँ, तो फिर ये मैं बोला था कि ये फिर शायद गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, बट यस, जो क्लार्क वेरी गुड डिफरेंशियल पिक फॉर यू टू ट्राई आउट। सी द ओनली रीजन व्हाई वी आर नॉट बैटिंग इनफ बैटर्स इज इतना हमें देख के कॉन्फिडेंस नहीं आया उनमें कि he'll कम ऑफ। वो ही एक इशू है इस Yep. 100 में विद द बैटिंग। और क्योंकि पिचेस अभी देखो वुमेन्स गेम भी यूज डेक पे हो रही है, अगर सेम डेक यूज हुआ तो इट इज गोइंग टू बी इवन टफर फॉर द मेंस गेम व्हेन इट स्टार्ट्स इफ इट्स ऑन द सेम डे। तो Like last night, yeah. लाइक लास्ट नाइट एग्जैक्टली। बट वहां पे भी आप देखो, सी दीज आर वेरी गुड साइंस टू रीड इनटू। वुमेन्स गेम में लो स्कोर हुआ, बट स्टिल मैनचेस्टर ओरिजिनल्स वे एबल टू पोस्ट अ गुड स्कोर बिकॉज देयर ओपनर हुज इन फॉर्म स्कोर्ड रन्स। तो फिल सॉल्ट हैज बीन स्कोरिंग रन्स, इसलिए उन्होंने कल स्कोर किया। आपने बर्मिंघम की बैटिंग देखी, बाद में बैटिंग तो थी नहीं वजह जैसे वहां पे, बट दैट्स हाउ यू हैव टू ट्राई एंड रीड इनटू द गेम कि भाई जो फॉर्म प्लेयर्स हैं उन्हें आप शायद बैट करो तो इट्स बेटर चांसेस ऑफ देम कमिंग ऑफ। बट यस, लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट खेलोगे तो मल्टीपल ऑप्शंस हमेशा ट्राई करना सबके जरूर ट्राई करें. बिल्कुल. So that wraps up the all-rounders for us, and then the bowlers we have gone with for now is Sodhi, Luke Wood, and Sam Cook. Again, there are some homeboys in this section that are currently not in our team: Jake Ball, Luke Fletcher, and if Trent want to go extra crazy, then Stephen Mullaney too. He has really good batting numbers here. So those are interesting picks if they actually slot in, but these are the picks that are expected to perform at large. या और एक यहाँ पे अगर आपको जय माता दी पिक चाहिए तो वो मर्चेंडल है, अगर वो खेलते हैं तो। ही हैज 10 Today the विकेट्स इन bench 4 seems गेम्स। very tempting. हाँ, तो उन्होंने 4 गेम में 10 विकेट लिए हैं यहाँ पे, एंड व्हेन ही टेक्स विकेट्स ही विल टेक 4 and 5। मतलब ही इज दैट काइंड ऑफ अ बॉलर। हाँ, तो या तो वो 40 जाएंगे या तो वो सीधे 4-5 विकेट लेंगे। तो किसी एक टीम में तो डेफिनेटली ट्राई करना अगर वो खेलते हैं तो। पर यस, जैसे हमने कहा, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। इट्स कार्टर, बहुत लोग खेल सकते हैं।
So again, which is why we are banking Trent to come good. But yeah, always go with your visualization क्योंकि हम सब अलग हैं और ग्राइंडिंग सब तो नहीं जीतते. जो अलग सोच रहा है वही जीतता है. बिल्कुल. And अभी के लिए our captaincy choice will be Daniel Sams if he is bowling first. Vice captaincy, would you hinge towards Sumit, or does that one point of the left-handers take you away? Because the problem is that the form of the Welsh batters, all-rounders, no one is actually encouraging. Yes, I think मेरे मन में दो प्लेयर है जिनके बीच में मैं कंफ्यूज हूँ. एक है डेविड मलन Hmm. और दूसरा है ईश सोडी. क्योंकि अगर ह्यूज देखे है तो सोडी कितना भी रन हो आई genuinely hope कि वो एक या दो विकेट लेके जाए. Assuming their batters put up a decent score. Hmm. नहीं तो you always have the option of going with an Alex Hales or a Luke Wood. क्योंकि Hmm. the way they're playing, the way they've batted, it could really give you those handy save points. Again, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा सेफ जाते हैं. किसी आइडियल शायद खुद की टीम हो तो आप लुक वुड और डेविड मलान या सैम कुक और एलेक्स हिल्स का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हो. समित पटेल को हम सिर्फ वो लेफ्टी का जो एंगल है वो ध्यान में रख के नहीं ले रहे. पर अगर Hmm. ह्यूज डेक है तो समित बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू ट्राई आउट. और जो क्लक का ना यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में नंबर थोड़ा बेटर है. तो Hmm. जस्ट अ गुड ग्रैंड टिप फॉर यू. इफ यू फील कि सेकंड इनिंग्स में अच्छा करेगा क्लार्क, मतलब जो काम बैकेट या डुबलर कर रहे हैं तो आप क्लार्क को बिल्कुल ट्राई कर सकते. इवन एज समबडी इज अ वाइस कैप्टन. That's daring. So that is your big call for this game. And for now, we're going Jai Mata Di with the vice captain. We're going with Ish Sodi. And that is what makes up our team for now for this specific game. Apart from that, if you guys have not already been joining, you must join the leaderboard contest where you can use up to 20% bonus. Now they're back to 20%. And you can also join the free entry contest, which is filling up super fast. The links are in the description below. So go ahead and join them right away. Never leave a free contest. That is the stroke of the heart. बिल्कुल. और देखो ये सारे कॉन्टेस्ट है जहाँ पे यू ऑल्सो हैव नथिंग टू लूज. आप बनाओ एक टीम में लुक वुड और सैमुअल को कैप्टन वाइस कैप्टन, बनाओ एक टीम में समित पटेल और डैनियल सैम्स कैप्टन वाइस कैप्टन. फ्री कॉन्टेस्ट में आप जाएगा भी क्या आपका. बट अगर वो चल गया तो भाई साहब पॉइंट्स ही पॉइंट्स, पैसा ही पैसा है. तो दैट बिल्कुल. हेरा फेरी का मीम आपके ध्यान में आ गया होगा. पर या कीप ट्राइंग मल्टीपल scenarios because 100 में we've seen it's not been that like play कि ठीक है मलाई नहीं कि भाई हाँ ये बेस्ट प्लेयर्स हैं इनको ले लो ये हो गया. ऐसा गेम्स नहीं हो रही है. Absolutely. And these are the ground dimensions for this specific game at Trent Bridge, where you generally see pockets are generally deeper, but at Trent Bridge, the pockets are the shorter points, and the square boundaries are also really short. So it will make it challenging for spinners on one end, but like we have been seeing, the pitches are getting very slow and sluggish. So unless you're a really good player of spin who knows how to play it well square, you might be in some trouble here because you here the short boundary will act as a temptation to play a rash shot even on a bad pitch rather than working for the batter. बिल्कुल बिल्कुल. और क्वालिटी स्पिनर्स हैं और इस टूर्नामेंट में क्वालिटी की भी ज़रूरत नहीं है. आप किसी से भी बॉलिंग करा लो कोई भी आके विकेट लेके जाएगा. Absolutely. So ये हो गई आज की discussion हमारी for the ground and for the base team. Apart from that, if you guys have any questions, always happy to hear. And interesting comment कि फ्री कॉन्टेस्ट में XYZ लोगों को हरा कर भी 50 रुपए ही मिलते हैं. अर्नब आप 50 इतना जीत रहे हो तो मेरे को पेटीएम कर दो यार, मैं उसको वो 50 का 500 बना दूंगा. पर अब ना वो पूछेगा कैसे बनाओगे वो बताओ. तो देन दैट्स द लीडर पॉइंट बोर्ड ऑफ. कॉन्टेस्ट भाई, वो 50 जीतो उसको एग्जैक्टली. लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट में डालो, बाइक लेके जाओ यप. घर पे, और क्या. बिल्कुल. I think any money that's coming to you for free, it's also good one. Absolutely, it's infinity returns. Can we discuss something about the women's game? It will begin in 15 minutes. So I think Nikhil Bhai has given you a big clue that the pitch is expected to be slow and it's a used deck. So that is something you can keep in mind and maybe rack up spinners accordingly. Would not be fair of us to discuss the whole women's game without doing groundwork on it. So yeah, that's what info we had. We were happy to pass. बिल्कुल. देखिए वेल्स पहले बैटिंग कर रही हैं. दे दे वन जस्ट वन गेम बट दे वन विद हैविंग अ डिसेंट स्कोर ऑन द बोर्ड. तो यू विल ऑलवेज प्रॉब्ली बैक देयर ऑलराउंडर्स इन सदरलैंड, निकोलस कैरी. पर
अगर यूज डेक है तो किंग एंड ग्लेन ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और And Glenn is due for a big set yet. बिल्कुल. और एक और अगर आपको ग्रैंड लीग पिक चाहिए ये गेम के लिए तो दैट्स कैथरीन ब्रंट. She is not somebody who's going to have a very quiet tournament. I think पिछले मैच she's had I think 1 or 2 wickets only in the entire 100 मतलब इस साल में. तो she hasn't been great form. हाँ, स्मॉल लीग तो आई थिंक 100 में कोई नहीं खेल रहा है तो प्लीज़ वो मिस्टेक मत करना. पर हाँ, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, मिनी जीएल्स खेल रहे हो तो किसी एक टीम में ब्रंट नाम को बिल्कुल ट्राई करना. बिल्कुल. उसके अलावा और कोई questions, you can put them in the comment section, else we are happy या to close the discussion and if you've got enough information. बिल्कुल. आई थिंक वुमेन्स गेम में वो एक आपके लिए ग्रैंड लीग बहुत एक हद तक थोड़ी ज़्यादा ईजियर रहती है अगर आपकी बेस टीम बहुत सही है तो. आई थिंक बेस टीम पे थोड़ा अगर आप ज़्यादा फोकस करो कि हाँ ये 7-8 प्लेयर जो हैं मेरे ये मेरे सभी टीम्स में होने चाहिए तो देन इट इज़ स्टिल वेरी पॉसिबल टू गेट वेरी गुड रैंक्स इन लीडरबोर्ड कॉन्टेस्ट. तो वहाँ पे डेफिनेटली प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ मल्टीपल सिनेरियोज. ऑप्शंस तो हमने दे दिए. ठीक है, we can close the discussion then for this specific game and thank you so much everyone for tuning in. And I guess someone's asked about Sodi, good C choice while bowling second. So yes, we already discussed and he's already the vice captain of our team. So no doubt about that. Apart from that, if you guys have anything else, happy to answer it on Twitter or take it in the comment section of this video. Thank you so much everyone for tuning in and we hope that you all have an amazing game. जय माता दी. लेट्स कीप विनिंग.